Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel Anand Nursing File here. Today we discuss about the nursing care plan on hernia. This is very important topic for examination purpose and also useful for the file practical file work. So you learn this topic with this video thoroughly. तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन हर्निया. Here nursing care plan for a patient with hernia. इससे पहले हम यहाँ पर हर्निया का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं. हर्निया क्या होता है. Here hernia occur when an internal organ or other body part protrude through the wall of muscle or tissue that normally contain it. मीन्स हर्निया जब हमारे शरीर का इंटरनल ऑर्गन और कोई भी बॉडी पार्ट अपनी वॉल ऑफ कैविटी से जिसमें वो नॉर्मली रखा हुआ रहता है वहाँ से इंटरनल ऑर्गन और बॉडी पार्ट का बाहर आना अपनी कैविटी से प्रोट्रूड होना हर्निया कहलाता है. A hernia happen when an internal organ pushes through a weak area in the muscle or tissue. हर्निया के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है अपने कैविटी के वीक एरिया मीन्स जो सबसे कमज़ोर पॉइंट है मसल और टिश्यूज़ के वहाँ से वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होते हैं मीन्स बाहर की तरफ निकलते हैं. देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हर्निया. हमारे शरीर में हर्निया बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिसमें इंग्वाइनल हर्निया, फीमोलर हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया, हाइटल हर्निया और भी बहुत सारे हर्निया हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं. और इसके अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन है वो प्रोट्रूड होता है मीन्स जैसे कि अम्बलाइकल हर्निया जिसमें इंटरनल ऑर्गन अम्बलाइकस के थ्रू प्रोट्रूड होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम in this diagram here umbilical hernia you can see here umbilical hernia means intestine or protrude through the umbilical area here next inguinal hernia and this is femoral hernia जो आप हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं. These are the different types of hernia seen in your diagram. Next देखते हैं sign of hernia here. Swelling or bulge in the groin or scrotum. Next increased pain at the site of the bulge. Pain while lifting means जहाँ पर हर्निया प्रेजेंट है वहाँ पर स्वेलिंग होना उस स्थान का बल्ज होना मीन्स फूलना. दिस इज़ टिपिकल साइन. नेक्स्ट इंक्रीज पेन एट साइट ऑफ द बल्ज मीन्स जो स्थान हर्निएटेड है फूला हुआ है बल्ज है वहाँ पर पेन होना. और जब हम कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी करेंगे तो पेन और भी अधिक इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट कंटिन्यू. इंक्रीज इन बल्ज साइज ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो बल्जिंग भी बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट डल लैकिंग सेंसेशन. नेक्स्ट सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ फुल साइन ऑफ बबल ऑब्स्ट्रक्शन. दिस इज इम्पोर्टेंट साइन. नेक्स्ट in hiatal hernia there are no bulge. Symptoms may include heartburn, indigestion, difficult swallowing, frequent regurgitation, bring food up back and chest pain. These are the sign of hiatal hernia means intestinal organ protrude into diaphragm जिसके अंदर कोई भी बल्जिंग नहीं होती. और जो साइन है वो हार्टबर्न, इंडाइजेशन, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, फ्रिक्वेंट रिगर्गिटेशन मीन्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ द कंटेंट एंड द चेस्ट पेन इसके मुख्य लक्षण है. तो देखते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान और हर्निया. अभी तक हमने यहाँ पर हर्निया का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था. हर्निया क्या होता है, कितना इसका टाइप्स है, कहाँ कहाँ होता है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं. अब हम देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन हर्निया. बिफोर राइटिंग द नर्सिंग केयर प्लान
Here we write first step of nursing process, that is nursing assessment. Here nursing assessment, we assess the patient. Here assessment of hernia, assess incision pain and non-verbal sign of pain such as crying, lethargy, facial grimaces. Next, assess vital signs. Next, assess hernia site. Next, assess skin turgor, mucous membrane. Next, assess nausea and vomiting, and assess parents' knowledge of hernia, including its cause and surgical management. These are the nursing assessment process doing in nursing process. This is the basic data to writing the nursing diagnosis for hernia. तो हमने सबसे पहला स्टेप नर्सिंग असेसमेंट लगा, जिसके बेसिस पर हम नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेंगे. यार नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, अक्यूट पेन. जो हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस है यहाँ पर अक्यूट पेन होगा. दिस इज़ द फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान. यार नर्सिंग डायग्नोसिस, desired outcome or goal in nursing intervention, rational and evaluations. These are the nursing process step. तो सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस हमारा क्या है. हेयर हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस अक्यूट पेन में भी रिलेटेड टू सर्जिकल रिपेयरमेंट. मीन्स जो सर्जरी हुई है उसके कारण पेशेंट को अक्यूट पेन होना. हियर आवर गोल इज टू रिलीव पेन एंड नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनल. Here assess incision pain and normal sign of pain such as crying, lethargy, facial grimaces. Here rational is determine the need for the irritation. Determine the need for the initiation of analgesic therapy. Means when the patient having pain, we start analgesics to relieve the pain. Next देखते हैं intervention number second. Here continue intervention second for pain, administer analgesics appropriate for the severity of pain and age. Here rational for this analgesics allay pain and discomfort caused by the incision. Means analgesics pain को दूर करता है एंड पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को भी सबसाइड करता है. नेक्स्ट मेंटेन पोजीशन ऑफ द कंफर्ट. मीन्स हम पेशेंट को एक कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे. या रेशनल इज फैसिलिटेट कंफर्ट एंड डिक्रीज पेन. नेक्स्ट अप्लाई एन आइस कंप्रेस ऑन द स्क्रोटल एरिया एफ हाइड्रोसिल इज corrected and apply scrotal support if appropriate. A rational is promote comfort by decreasing the swelling. Next provide support to the buttocks during lifting of position change. Avoid strain and pull on incision site. Next, encourage parent to change diaper frequently or prevent irritation. Next, provide toys, games for quiet play. Here, rational is facilitate diversionary activity to detract pains. Means patient को मीन्स जो बच्चा है उसको टॉयज़ गेम्स हम प्रोवाइड करेंगे जिससे वो खेल सके कुछ और उसका दिमाग डाइवर्ट हो. नेक्स्ट इंस्ट्रक्ट पेरेंट टू होल्ड द इन्फेंट ड्यूरिंग द फीडिंग और वाइल इरिटेबल फ्रिक्वेंटली बर्पिंग टू रिमूव swallowed air. Rational is reduce strain on the incision and promote comfort. Next, educate parent on the cause of pain and promote understanding. This rational is promote understanding. Next intervention. Here educate parent on the cause of pain and interventions need to relieve it. Here rational is promote understanding and of treatment and pain post operatively. तो यहाँ पर ये हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन कंप्लीट हुआ है. तो देखते हैं हम इसका यहाँ पर एवेल्यूशन क्या लिखेंगे. यार जो हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस था अक्यूट पेन में रिलेटेड टू सर्जिकल रिपेयरमेंट. मीन्स आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस, यार
We'll write now the evaluation. This is the last step of nursing process here. Evaluation for this now. Pain relieved and patient feel comfort. Here our goal is achieved by these interventions. तो ये हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस नंबर सेकंड. Here this is second diagnosis. Deficient knowledge. Deficient knowledge may be related to lack of knowledge about the post-operative care. Means parents having a little bit or no knowledge about the hernia care post-operative. This is a nursing diagnosis. इसका गोल देखते हैं अपन. टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज, जो हमारे यहाँ गोल होगा. नेक्स्ट इंटरवेंशन रेशनल. तो यहाँ पर इंटरवेंशंस जो हम देने वाले हैं वो देखते हैं. असेस पेरेंट नॉलेज ऑफ अर्निया इंक्लूडिंग इट्स कॉज, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड assess parents' willingness and interest to execute treatment regimens. This is the intervention here. Rational is promote efficient plan of instruction to ensure compliance. Next intervention, provide parent and child as appropriate with clear and precise information in understandable language. Utilize teaching aid and encourage questions. Here rational is as certain understanding based on age and learning ability. Next, continue encourage parent to hold infant when crying and during feeding. Instruct the child to avoid pushing, lifting, or engaging in vigorous activity or gym classes. Here prevent strain on the incision and possible hernia recurrence. Next, instruct in doing sponge bath till the incision heal. Here rational is maintain integrity of the incision. Next, inform to keep incision dressing until it peels off and to apply diaper so that it does not cover the incision. Here rational is maintains dry and clean incision site. Next, encourage parent to increase fluid intake and protein rich diet as ordered. Here rational is promote return to nutritional status without causing gastrointestinal strain on the incision. Next, reassure parents that infant normally tolerates surgery well and recovers without incident, and that this condition is one of the most usual surgeries in the infancy. Here provides assurance and comfort to parents in giving care. तो यहाँ पर हमारे सेकंड डायग्नोसिस के जो इंटरवेंशंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट देखते हैं evaluation for this nursing diagnosis. ये हमारा था डायग्नोसिस नंबर सेकंड. डेफिशिएंट नॉलेज में भी रिलेटेड टू लेक ऑफ knowledge about post-operative care. Evaluation means after providing these interventions we evaluate the patient for achieving goal or not. Here improved level of knowledge about the post-operative care. तो ये हमारा सेकंड डायग्नोसिस यहाँ पर कंप्लीट हुआ है. But third diagnosis of this care plan, risk for injury. Risk for injury may be related to intestinal obstruction. This is the diagnosis number third for hernia. Here desired goal is to reduce risk of injury. Here nursing intervention and rationale for this. Here assess by palpation for any swelling in the umbilical or inguinal area while infant cries or when child strain or coughs, and ability to diminish swelling with the gentle compression if the wall force into the sac. Here rationalis shows hernia that is reducible, easily manipulated back into placed. Next देखते हैं intervention. Assess hernia site for any tenderness and other symptoms such as increased abdominal girth, loss of appetite, irritability, and defecation changes. Here rationalis reveals partial or complete obstruction as a result of incarceration and strangulation. Here encourage parent to hold and feed the infant when
Hungry to prevent the infant from crying. Air. Rational is avoid ball from being forced into the sac. Next, instruct parent to notify sign and symptom to the physician. Inform of reason for disorder and expected effect and those that signify an obstruction. Here, rationalists prevent more severe complications of eventual gangrenes of wall. Next, counsel parents regarding dietary inclusion and restrictions to avoid strain. Here, rationalist modification of diet to prevent constipation, decrease straining, and increase intra-abdominal pressure that force wall into sac. Next, intervention teach parent of surgical procedure to repair hernia and possible hydrocele and course of progress to expect. A rationalist to correct and repair hernia and hydrocele if present before the development of a complication. Next, reassure parents that a hernia usually resolve itself and if not, surgery may be expected to repair. A rationalist provide information regarding the prognosis of the disorder. तो यहाँ पर ये थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस के इंटरवेंशंस कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इवेल्यूशन फॉर दिस nursing diagnosis, the goal or achieved or not. Here, evaluation. After providing these interventions, we find a evaluation that the risk of injury reduced. Here, evaluation, risk of injury reduced. Next देखते हैं nursing diagnosis number fourth. In number fourth nursing care plan diagnosis here, risk for fluid volume deficit. In nursing diagnosis number fourth, risk for fluid volume deficit may be related to post-operative status, nil per oral status or dehydration. Your goal is to maintain adequate fluid volume. Here, nursing diagnosis risk for fluid volume deficit may be related to post-operative status, NPO status or dehydration. Your desired goal to maintain adequate fluid volume. Interventions and rational. Intervention number first. Here, intervention and rational. First, assess onset of nausea and vomiting, quality, quantity, and presence of blood while food and order. Here, rationalist provides information about MSS and defining characteristics. Next, second intervention, assess skin turgor, mucous membrane, weight fontanelles of an infant, last void and behavior change. Here, rationalist provide information about dehydration status, including intracellular fluid loss, decreased activity level, malaise, weight loss, poor skin turgor, and concentrated urine. Next, assess vital sign including apical pulse, provide monitoring of cardiovascular response of dehydration, weak thready pulse, drop in blood pressure. Next, intervention, rational continuous here, increased respiratory rate may contribute to fluid loss. Next, intervention, monitor urine specific gravity, color the amount every wording or as ordered. Here, rationalist concentrated urines with an increased specific gravity indicates lack of fluid to dilute urine. Next, monitor laboratory data results as ordered, electrolyte, blood urea nitrogen, complete blood count, pH, etc. Here, rational allow identification of the fluid loss and electrolyte imbalance. Next, monitor NPO status is if prescribed, provide rest for the gastrointestinal tract because of the nausea and vomiting and associated medical conditions. Next, position child on the side or sitting up when vomiting. Keep suction available. Here, rationalize avoids aspiration of the MSS. Next, administer antiemetics as ordered. Here, rationalize given as prophylaxis and treatment. Treatment to post-operative nausea and vomiting. Next, initiate and monitoring IV administration of nutrients as prescribed
Here provide fluid and nutritional support to replace active fluid loss and prevent of uh, fluid overload. Next, initial small amount of clear liquid as tolerated when the nausea and vomiting subside. Offer oral hydration fluid. Breastfed babies need frequent short feeding at the breast. Air rationalists provide fluid in minimal amount until nausea vomiting resolved. Next, instruct patient regarding cause of nausea and vomiting, sign of dehydration, and when to report them to physician. Here, rationalists provide information for immediate treatment of excessive loss of fluid and electrolyte caused by nausea and vomiting. Here, intervention for this diagnosis complete. Next, process for this care plan nursing evaluation for this diagnosis. Here, हम ये हमारा कंप्लीट हुआ है केयर प्लान नंबर 4 और हम देखते हैं अब evaluation को. Here, evaluation for this diagnosis, adequate fluid volume maintained. जो हमारा गोल था to maintain fluid volume. Here, to maintain adequate fluid volume. Here, evaluation adequate fluid volume maintained. तो ये था diagnosis number 4 for this nursing care plan of hernia. Risk for fluid volume deficit may be related to post-operative status NPO and status of dehydration. एक बार फिर हम यहाँ देखते हैं. आप यहाँ से इन through this picture you take notes here easily. This is first nursing care plan of hernia, acute pain, related diagnosis. Next, second care plan, deficient knowledge, related diagnosis. Here, next, third, here, risk for injury related diagnosis. Next, risk for fluid volume deficit related diagnosis. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये हर्निया के नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट हुआ. तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल Anand nursing file for nursing competition examination here and press bell icon also. Thank you.